Welcome all of you. So nice to see all of you here. So we are on the third session on NIOS, that is decoding the NIOS part 2. So secondary, senior secondary, we are going to talk about it. And for that we have, you know her very well, Ms. Jaspreet Kaur. Jaspreet Kaur, she is the principal of Amrit Masonic School, a school for children with additional needs. She is a parent professional with 18 years of experience in special education. She is expert in universal design of learning and has transacted curriculums of all national boards. And Jaspreet has successfully implemented all levels of NIOS programs for CWSN for the last 7 years. And she is very enthusiastic advocate of the open schooling system. So I'll welcome Jaspreet and Joshua sir. I'll not take much of a time because we need more time to discuss question answers and everything. So I will directly hand it over to you both. Yeah. Okay, good evening everyone. Namaskar. I'd like to make two changes to what Harshali said. One, I'm primarily her mom. And it's no longer 7 years. I think we've been doing NIS for, I think, thoda purana profile. We've been doing, I think, at least 9 years now. Because, you know, the more you do, the more transact, the more you interact with the NIS system, the clearer it becomes. So this is Ekam. Today, her presence actually makes a lot more difference because she's now 20. She just turned 20. When she was 12, I think this school that I keep talking about, the very nice, very well. It was an inclusive school. It was an expensive inclusive school, but they were handling everything very well to the best of their abilities, which was very good. But at around 12, 13, I was told that we're going to move her from the functional group to the from the educational group to the functional group. और उसके दौरान भी in the last 7 years also they had been doing a ping pong. You know, she'd been academic sometime, and 1 year she'd been functional. And like all parents, this is something. Switch off that light. Like most, the best thing that I could tell you today is that the fear of the change. NIS is a big mental. It's a paradigm shift. It's a big, you know, mental paradigm shift. तो जब मैंने किया था मैं भी पूरी रात रोई थी. I was very insecure, but please look at her and learn. And you know, even though I'd already started empowering myself, I'd already started doing all the courses. I was already a part of Amrit Masonic School and already become the principal. I was trying the NIS system with other students, thoda, you know, tentative steps, but still pulling Ekam out of that school was never even on my horizon. You know, she's in a good school, they're doing their best. Like all parents, subconsciously I knew गलत हो रहा है, but consciously उसको acknowledge करना बहुत मुश्किल काम था. वो एक बहुत बड़ा डर है. Harshali, I'm actually talking to you. So exactly, I'm in the exactly at the same situation right now. My school, my kids are going on the mainstream, and consciously I know, and subconsciously also I know what is going to happen and what I have to do. But trust me, these sessions are helping me a lot. Thank you so much. Because मैं सोच में मैं भी चली गई हूँ, and I'm getting feedback from parents also, because they are also looking towards, positive towards NIOS. See, some parent telling you, please look on me as Ekam's parent. In school also, हम लोग 72 parents हैं. I am the 72nd parent. बहुत कम लोग मुझे मैम या प्रिंसिपल ऐसा कोई कुछ नहीं बुलाता है. इतनी कोई इज्जत नहीं करता है. It's very simple. I'm Ekam's mom. What I learn from her, I take to others. You know, what I learn from others, I take to her. So the point here is that when you're in a good setup, जहाँ good है, not so good है, very bad है, but she was in a very decent setup. But I knew, subconsciously, I knew very well that her capabilities were way beyond this, because इसका early intervention सारा मैंने किया था.
I mean, I've been an integral part of it all, and I'd been doing all my courses, and I'd been experimenting on her also. That's another thing I would say. I saw a webinar recently where somebody said that don't experiment on your children if you become special educators. I don't really agree. मतलब अगर हम स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ऑफ कोर्स आपको वो टाइम बांटना बहुत जरूरी है. राइट नाउ आई एम अ मॉम एंड राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 hours आई एम गोइंग टू बी अ टीचर. But okay, anyway, let's go back to NIOS. So she was in a good place, and for I think a lot of this is going to resonate with a lot of parents, this story. So this she joined them in when she was 8, I think. No, younger. So she was there for a good 8 years. और उन 8 साल में वो लोग up and down करते रहे. एक साल उन्हें लगता था ये academic के लिए ready है. अगले साल suddenly should be moved from the academic class to a functional class. And पता है बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी जो हमें होती है वो ये है कि बच्चे समझ नहीं रहे. एक्सप्रेस करने में स्लो है तो उसका मतलब ये नहीं कि समझ नहीं रहे. You know, so she was understanding that she was being shunted from one place to another. It was contributing to who she is today, despite all my best possible efforts. The undermining. Sorry. The undermining that happened during those days, I will not be able to recover it. So parents, please be very, very conscious. In this growth years, when the child is from 6 to let's say 12 to 13, बहुत ध्यान रखिए इस बात का. उस समय बच्चा एक्सप्रेस बेशक ना कर पा रहा हो, लेकिन अगर कुछ हल्का सा भी गलत हो रहा है स्कूल में, उसका बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नियर परफेक्ट इम्पैक्ट, नियर परमानेंट इम्पैक्ट पड़ेगा उसके साइकी पे. So anyway, at 12B, when they said that we'll be moving to a functional class, I started making excuses of, you know, you're very expensive. And then these people slashed her fees by 70%. मेरे पास एक और बहाना बन गया, एक साल और सेफ में. Please don't do this. Please don't hide behind. Please don't make the mistakes me and a lot of other senior parents have done. उस समय बहाने बनाने से या keeping yourself safe really harms the child. And by the time then she finally came out and she came into the NIS system, I realized that my groundwork had been so well done. All the dots that I had made at that point were so well joined कि उसको सिर्फ एक structure चाहिए था. और NIS ने वो स्ट्रक्चर दे दिया. Most of the parents have their children on autism, on the spectrum, so आपको structure word तो आपका वो मंत्र है. So NIOS is beautifully structured. उसको आपका जो regular structure है आपके बच्चे का, उसमें बहुत easily incorporate किया जा सकता है. That is, please, if nothing else, take this from these webinars. NIOS can very easily get incorporated to the other, you know, therapies or IEP plans that you have for your child. Okay, so today we are discussing secondary and senior secondary. Goal तो हमारा यही है. See, चाहे हम कोई भी education कर रहे हो, you know, whether it's mainstream, parallel, lateral, whatever, eventually we'd like them to become contributing members of the society. That is what I like to call it. Whether they're employed or not, yes, employment is extremely important. So employment is extremely important, but we want them to become. See, a lot of parents come to me, ma'am, इतना पैसा जमा कर दिया है. आज ये सारी बातें थोड़ी ज़्यादा important है मेरा ख्याल. NIS is equally, but I'd like to tell you what leads to NIS. So right now we're talking about children who become slightly older, 12-13 साल के हो चुके हैं. More often than not, parents will come to me. We have parents from, you know, one of our parents, like I told you last time, is the head of a very big North India head है वो. All India head है एक IT company के. कुछ स्टूडेंट्स रिक्शा वालों के बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स मेड हैं, but the bigger population is the middle class. So more often than not, parents will come and tell me, मैम पैसा जमा कर दिया है, इंटरेस्ट आता रहेगा. हमारी बिल्डिंग में एक फ्लोर पे वो रहेगा, एक फ्लोर पे रेंट पे देंगे और एक फ्लोर पे उसका भाई रहेगा. That's a beautiful system, isn't it? It takes care of his social needs, daily needs. He's among his family, and there is a regular income also. But is that enough? I have my younger daughter. If अगर उसके लिए मैं ये plan बनाऊँ, वो तो won't she go stir crazy? We don't need to be, no, we need to be gainfully employed. If not employed, gainfully engaged.
अब हम लोग रिटायरमेंट के बाद भी हमारे पेरेंट्स, माय फादर इवन आफ्टर रिटायरमेंट वांट्स टू डू समथिंग, because when he was idle for 2 years he said I'm going stir crazy. सारी जिंदगी मेंटल स्टिमुलेशन कर करके मतलब यू नो I'm used to being stimulating myself. I can't just sit at home. तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जिनको हमने इतना अच्छा रेमेडिएट किया है, इतना अच्छा इनपुट दिया है, वो सडनली एट द एज ऑफ 20 घर पे बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे? If not 20, let's say at the age of 40, will they be quite okay, you know, just sitting at home watching TV and there's a maid coming feeding them, or maybe they even cooking for themselves? But क्या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे they are, you know, they're engaged, but they're engaged in a manner that satisfies them. It need not be an employment. It need not be something that is stimulating them everything, but it has to be something that satisfies them. So अगर एक बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है, बहुत शौक है, कुछ क्यों ना ऐसा कुछ उसके लिए बनाया जाए, एक स्टूडियो हो जहाँ पे that passion itself can be taken forward. And my experiments in the last 5 years have told me that the same way that the society has opened up for our neurotypical children, हम अक्सर कहते हैं अब इंजीनियर डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है. For the last good 20 years now, parents don't look at मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और बेटी डॉक्टर बनेगी. So if the society is opening up for the neurotypical children, trust me on this one, the society is opening up for the neurodiverse people also. बहुत opportunities हैं. So the reason what we're doing today is, when ACOM started on the NIOS journey, employability was not a given, was not a very big uska. Okay, we were aiming for employability, but 100% hoga pakka nahi tha. With every passing day for the last 7 to 8 years, employability is becoming surer and surer. But yes, for that you need to be at least senior secondary. For some of the courses need to be secondary. So now secondary and senior secondary is not just mental stimulation, is not just structured growth. It is your children's future. So अब हम NIOS का जर्नी जब भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, tell them, मैंने आपको पहले भी लास्ट वेबिनार में बताया था, please make sure OBEs is just a stepping stone to NIOS. But whatever your child's ability, please take this. Let this be your takeaway today. NIOS secondary is doable. I have seen very severe children very severely on the spectrum, जिनकी sensory needs बहुत high है, even after reaching puberty, even at 13, 14. Their bodies make them so uncomfortable that they're not able to lead regular lives. Even these people, while running around, are able to absorb the NIS curriculum. अगर आप NIS secondary को ठीक से adapt कर लें, it is doable by almost everybody. Okay, so this is what we're doing today. Relaxations, points of contact. Let's go forward. I'll tell you what I have done. So we are about. Ekam, are you done? Have you met everybody? Okay. Would you like to tell everybody what you're doing? चलो बाद में करते हैं. When we discuss with everybody, then you can talk. Okay. Abhi, can I go forward? I am telling you. Okay. Abhi आप बताओ. Okay. So straight to how to choose subjects. Actually, भूमिका सारी बन चुकी है NIOS की ना. Everybody is clear on what NIOS is. So we are jumping straight. आपने OB किया हमने अभी तक. आपने 3rd, 5th, 8th कर लिया. अगर 3rd, 5th, 8th नहीं भी किया कोई बात नहीं. I mean, as I'm sure we all know very well by now that till the secondary level, there is no prior certification is needed. You'll have to sit down, Ekam. Otherwise, you'll be filming with disturbing the frame. अब बैठ जाओ यहाँ पे, chair लेके बैठ जाओ. Till secondary, no prior certification is needed. You simply have to state that I am capable of studying, and that is more than enough. Senior secondary, you need a certificate of secondary, whether it is from a mainstream school or an NIOS secondary. लेकिन 12th में एडमिशन के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए. 10th तक आपको कुछ नहीं चाहिए. But let's just say 2 scenarios. One scenario, you already in the NIOS system और आपने at least एक level NIOS का कर लिया है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा choice of subjects आपके पास नहीं था, which I think is a good thing up to a certain point. अगर CBSE ये कहता है कि 10th तक बच्चों को सब कुछ करने दो, MBBS में डॉक्टर्स पहले कुछ साल सब कुछ करते हैं, फिर स्पेशलाइज करते हैं हर जगह. तो अगर CBSE भी अपने न्यूरोटिपिकल बच्चों को कहता है तो कुछ सोच समझ के उन्होंने ये प्लान बनाया होगा. और NIOS का भी जो ये फॉर्मूला है कि सेकेंडरी तक उन्हें सब कुछ करने दीजिए,
एक्सपोजर दीजिए मैथ्स का भी, you know, math, science, let them be exposed to everything. Why? Maths and science builds your logic. If done properly, maths and science is what our lives are based on. आप इस समय मैं अपने सुबह से अगर आपको अपना दिनचर्या, you know, if I tell you what I did since morning, pick out any incident, I'll be able to explain it scientifically. We were doing a senior secondary painting class this morning, और उसमें एक टेक्निक है पेंटिंग की. We're talking about 3 BC, before Christ. These people did not know what carbonation is, but that technique uses carbonation. हमारी लाइफ का हर एस्पेक्ट, चाहे हम ब्रश कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, हर एस्पेक्ट साइंस से लिंक्ड है, मैथ से लिंक्ड है. So why should children be exposed to at least some basic level? And I'm again saying, if taught properly, that amount of maths and science is quite enough. But now that you've come to secondary, the syllabus is OBE तक study centers को option था syllabus choose करने का. And what we had discussed was, please go with a study center that has the easiest syllabus. Level 8 में अगर आपको कोई study center level 6 का NCERT books use कर रहा है, उसको choose कीजिए. Because OBE is a preparation for secondary. Secondary में आपके पास आके कोई option नहीं है. The curriculum is at par with CBSE. When Ekam was doing her 10th, my younger one was also in 10th. So I was able to compare CBSE 10th curriculum, NIS 10th curriculum first hand. So I can absolutely vouch for it. NIS का curriculum अभी भी थोड़ा मुश्किल है, because CBSE की revisions हुई है, NIS के curriculum की revisions अब हो रही है, अब तक नहीं हुई है. So it is tougher. Maths has calculus, trigonometry, everything. Science has physics, chemistry, bio. SST has a very advanced level of history, civics, and geography. Russian Revolution, French Revolution, you name it. So अब हम 10th में आके वो subjects choose नहीं कर सकते. We're going to be factual. We're going to keep our children's abilities in mind. Child's ability should decide the subjects. Let's take an annotation. Ma'am, just a second. I'd like to highlight a few points. So child's ability should decide the subjects. This is most important, but having said that, what are the options you have? The language is selectable. Okay, Harshali, I've forgotten a slide here. Okay. हमने आज सुबह सोचा था, वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी या अभी ऐड कर देते हैं. It has a list of subjects. Actually, it's not very easy to incorporate because the number of subjects is 80. But let's just do a basic discussion right now. So you have to choose, as an OBE, you choose minimum 1 and maximum 2 languages. Then you have 3 levels of subjects. Please give me just a minute. Okay. So we have 3 levels of subjects. You want to do this? There is academic, there is languages, there is academic, and then there is vocational. यहाँ पे कोई confusions नहीं है subjects वाली, जैसे OBE में confusion थी. You know, level A and B, you needed to clear 4 subjects. यहाँ पे बहुत clear है. You have to clear a minimum of 5 subjects to get a certificate, and you're allowed to choose 7. So. I'll just put the link to the subject. No, not just that. I annotate a bit. So हम लोग 5 subjects में क्या करेंगे? You're taking 1 language. Then आपके बाकी 4 academic subjects हैं. That is first scenario. The second scenario, like I told you, there are 3 types of subjects. One is languages, one is academic subjects, and one is vocational subjects. So what you can do is 1 language and 4 academic subjects. 1 language and 4 academic subjects, or 1 language, 3 academic subjects, and 1 vocational subject. हमारा वो OBE में भी था, यहाँ पे थोड़ा different है. यहाँ पे आपको जो vocational subject के लिए हम, if you remember, हमने discuss किया था study centers. So for OBE we had AAs, for accredited agency, institute agency, for 10th and 12th. So for OBE you had AI. For academic subjects, secondary, senior secondary, you have AAs. You remember we done 2 more. AVI, मैंने पहले ठीक बोला था. Remember we have 2 more, AVI and SAID. If you remember, AVI is Accredited Vocational Institute.
ओके, नाउ ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. स्टडी सेंटर्स की काफी प्रॉब्लम है iOS में. The number of study centers is very less. Today morning I was speaking to somebody in Raipur. They could not find a single study center there, which is very true, which is why NIS is forever encouraging people कि please study center बनिए. उसका process भी बहुत easy है और it is not expensive at all. But having said that, अगर AI है तो AVIs तो बहुत ही कम है. So AVI is a study center where, okay, so we have AAs, you have AIs, you have AVIs, and you have SAID. Special accredited, ulta ho gaya. SA, sorry, it is SAIED. Special Accredited Institute for Disadvantage, Education of the Disadvantaged. This, like I've been telling you, is disadvantage. This is not disabled. वो disadvantage में बहुत कुछ लेते हैं. Economically weaker section के बच्चे और marginalized people. There's some religions that are marginalized. We talk about jail inmates. You know, they have special categories here. So this is for OBE, accredited agency. This is for 10th and 12th, accredited institute. AVI is accredited vocational institute. So let's just discuss the two that we have to do today. So we have AI, we have AVI. AI is a study center. जब आप registration करेंगे, आपको 3 choose करने होते हैं. Choosing the AIs is mandatory. Every single time, the first choice you will get. But like I had said in OBE, the same thing applies here also. If there's an option, you're fortunate enough to be in a place like Noida, where there are lots of AIs, please go visit them, talk to them. थोड़ा सा staff से interact कीजिए. लेकिन जैसे हम OBE में interaction क्यों करते थे? You go to AIs to see which one of them has the easier curriculum. Remember? OBE में हमने डिस्कस किया था कि आप स्टडी सेंटर्स पे जाके ये देखिए कि स्टाफ तो अच्छा होना चाहिए, कि कौन से स्टडी सेंटर में करिकुलम इजियर है. यहाँ पे करिकुलम का कोई इशू नहीं है. You know, there are books which will be delivered to your house once you have taken admission. The curriculum is fixed. After you've chosen the subjects, the curriculum is fixed. Study center से आपको बहुत ज़्यादा कोई help नहीं मिलने वाली है subjects में. लेकिन we'll come to it a little later. In 10th and 12th, another factor that gets added is practicals. Practicals is the responsibility of the study centers. So अभी भी आपको बहुत ज़रूरी है AIs पे जाके check करना. You know, okay, we'll come to that in a minute. So right now we're discussing subjects. So you have AI and AVI. AI is the study center जहाँ पे जाके जो आप अपने academic subjects के exams दोगे, theory as well as practical. AVI, Accredited Vocational Institute, is the place where if you choose a vocational subject, then you will be going for your theory and practical exam. Like I told you, there are 3 classes of subjects. We have languages, then we have academic subjects, and then we have vocational subjects. तो जब आप चूज कर रहे हो लैंग्वेजेस में 1 और 2 आपने चूज कर लिया, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2. The thing is not okay. I don't know what's happening. Minimum 1 or maximum 2. You can, the rest of your 4 can be academics, or you could take 1 language. You could take 1 language, 3 academics, and you could choose 1 vocational. Right after this webinar, I'm going to attach those. वैसे तो आपको मैंने prospectus बताया था. Prospectus में बहुत clearly subjects mentioned है, but vocational का I can send you photographs also from my book. Abhi, I just sent a link in the chat, so you could. So Sir has already put the chat for the link for the chat. Link in the chat. He said the link. Send the link for the subjects. So suppose you've chosen a vocational subject, आपका 2 admissions होंगी. This is all the point I've been trying to come to. In OBE you had 1 admission. Secondary and senior secondary, अगर आप vocational choose करना चाहते हैं,
तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 एडमिशंस हो जाएंगे, इसका एक एडमिशन होगा और इसका सेपरेट एडमिशन होगा. बट अगेन I'm saying it again and again, the registration is very easy, the form is very easy. और जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, जब आपने 5 एग्जाम्स क्लियर कर लिया है, अपने आप NIOS आपका कोलेट कर देगा और आपके सर्टिफिकेट एक ही मिलेगा आपको. So I think I told you last time also, a lot of our students, what they do is at level 8, OB level C, there is a vocational pre-vocational subject में bakery का. So अगर आप वो ले लेते हैं और वो ये वाला सब्जेक्ट भी रेजोनेट होता है 10th और 12th में भी. So 10th you have bakery and 12th you have catering. You do all 3 of them and by the time you come out, and there are other such options also, there is just one option. तो जब तक आप 12th करते हो, आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी है. Okay. Actually, keep slightly low here, but I would like to touch upon this. इसको डिटेल में कर सकते हैं फिर कभी. Vocational subjects 2 types के हैं. There are 2 types of vocational subjects. One that are incorporated into the secondary and senior secondary curriculum. पहला टाइप वो है जो आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के साथ करते हो. As the 5th subject, they also have standalone vocational courses, जो आप 10th और 12th के बाद कर सकते हो. ये सभी वोकेशनल कोर्सेज, कुछ पे तो रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट सिर्फ ओबी लेवल ए और बी है, कुछ में रिक्वायरमेंट 10th है, कुछ में 12th है, but they have a lot of standalone vocational courses also. But these can only be done in AVIs, and even in a place like Delhi, where we're very fortunate in the number of AVIs and A's and AIs, वहाँ भी every AVI will be able to offer you only 1 or 2 vocationals, not many. The R Study Center Amar Jyoti is a wonderful place. It has about 7 to 8 vocational courses. They have standalone vocational courses also. लेकिन ये करके आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. More often than not, what I've heard from people from across the country is that finding an AVI that standalone vocational course, जो आप 10th और 12th की बात करते हो. For example, in computers, suppose आप 10th में choose किया एक subject data entry operations. We'll come to that in a minute. आपने that is basic computers. मैं आपको 10th में आप 10th इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, वो आपको सब कुछ करा दिया. करिकुलम इतना अच्छा है कि बच्चे 10th और 12th का अगर ये क्लियर कर लेते हैं, they become very good at internet connections are still. Guys, can you still hear me? Yes, yes. हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क, हाँ, हमारा मेजर तूफान शुरू होने वाला है यहाँ पे, दिख रहा है साफ बाहर. इट वाज वेरी हॉट सिंस मॉर्निंग, बट अभी लग रहा है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. So at times, you know, the connection gets disturbed. We'll come to that. I was discussing standalone vocational subjects. तो आपने 10th और 12th में data entry operations करके subject कर लिया. Sorry, data entry operations. It's called DEO. It's basics of computers. But बहुत अच्छा cover करता है. बच्चे जब तक ये curriculum करते हैं, they become very very good. मैंने काफी हद तक Excel और Word एकम को सिखाते सिखाते सीखा है, जो shortcuts वगैरह सब कुछ very well structured. इसके बाद अगर 12th के बाद उनके पास डिप्लोमा, 6 months का डिप्लोमा कोर्स भी है स्टैंडअलोन और 1 year का भी है. अगर आप उसको कर लेते हैं तो you are actually quite well on the path to becoming employed as a computer operator. So आपने 10th और 12th में DEO कर लिया और उसके बाद आपने स्टैंडअलोन वोकेशनल कोर्सेज कर लिए, चाहे वो 6 months का कीजिए या 1 year का कीजिए. और कंप्यूटर कोर्सेज एटलीस्ट इजीली मिल जाते हैं एवीआईज में. जो बाकी हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, कार्पेंट्री एंड टेलरिंग, वो सब जगह नहीं होते हैं बिकॉज ज्वेलरी मेकिंग. इसलिए बिकॉज वो ज्यादा इसलिए नहीं होते बिकॉज शायद हमने ये डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम बेसिक्स में कि एवीआई को एक्रेडिटेशन मिलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है. तो सपोज आप टेलरिंग करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 50 मशीन्स होनी चाहिए. The infrastructure needed for the vocational courses is pretty high. इसलिए AVIs बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन अगर आप बन जाए तो the courses, you know, there is this one course for radiology. It is as expensive as I think 40,000. Radiology का भी कोर्स है vocational का, और बच्चे करते हैं. हमारे स्पेशल नीड्स बच्चे बहुत कर रहे हैं.
Okay, so this should fine. So languages में हमने कर लिया. There are three groups of languages, three groups of subjects: languages, academic, and vocational. Study material is the same, unlike in OBE. अलग-अलग सेंटर में अलग-अलग नहीं होगा. बिल्कुल फिक्स करिकुलम है. आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो नॉन कोविड ईयर्स में 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर आपकी बुक्स आ जाती थी स्पीड पोस्ट से, लेकिन पिछले 2 साल में नहीं हुआ है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन. They are in the regular PDF format. Then they are in the DAISY format. They're in the audio format. They're in the video format. The books are there in every possible format on the website. अगर आपकी books late भी आ रही हैं, so what there are 2 things that I suggest to parents. एक तो लाइब्रेरी खुद बना लीजिए. हमारे स्कूल में हमने बनाई हुई है. सारे नोएडा में सबको पता है कि जिसने भी क्लियर कर लिया वो अपनी किताबें आके हमें दे जाएगा. और हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ बुक्स रहता है. अगर बच्चों को नहीं अभी बुक्स आई हैं, लेट हो गई हैं, तो वो हमसे आके बोरो कर सकते हैं. Second thing is keep downloading and printing 1 chapter at a time, and you can start the education even before the books come. This is what I've mentioned here. No, this I've mentioned to. Okay, this is how to choose the subjects. आप बिल्कुल नए हैं, आपको NIS सिस्टम को बहुत ज्यादा नहीं पता. आप मेन स्ट्रीम से आए हो, 9th से आए हो, आपको 9th का पता है CBSE के सब्जेक्ट्स कैसे हैं. आपको इतना पता है कि आपका बच्चा CBSE का जो करिकुलम है, he is not being able to transact it. It's very clear to you that even with the CBSE reservations. Okay, so CBSE और NIS में can anybody tell me क्या difference आपको अभी तक समझ में आया? Basically 2 differences हैं. एक आपका सबसे बड़ा difference है age. CBSE कहता है आपको इस एज में आप ये एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद नहीं. सपोज बच्चा बीमार हो गया, सपोज पेरेंट्स के घर पे कोई डेथ हो गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, आपको 1 साल छोड़ना पड़ गया. Once you've come out of the education system, our education system does not let you go back, which hopefully the new education policy is going to change. But so far that was the biggest handicap, or that was the biggest advantage NIS had over CBSE. कि आपका कोई एज लिमिट नहीं है, एज फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड सेकेंडली द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स. नहीं तो CBSE भी अब बहुत चॉइस देता है, CBSE बहुत सारे रिलैक्सेशंस देता है, लेकिन ये जो 2 बातें हैं कि एज आपकी होनी चाहिए और आपको 1 ही साल में खत्म करना है, ये NIS का एडवांटेज है. NIS lets you space yourself. You can, the registration is valid for 5 years and there is no upper age limit. Okay, so आप CBSE में थे और आपको ये समझ में आ गया है, ये रिलैक्सेशंस के साथ भी my child will not be able to do the regular CBSE 10th. I will have to look for an alternative, and NIS is on your horizon. You're thinking about NIOS. उसके बाद the biggest question parents have, क्या NIS के subjects बच्चा कर पाएगा? उसका तरीका क्या है? सारी books online है. English का जो 10th का है उसमें 28 chapters हैं. देखते ही डर लग जाएगा. Home science में 24 chapters हैं. But what you do is download the first chapter, or go through the first chapter, go through the 14th chapter, go through the 24th chapter. That is what I suggest to parents. In fact, मैंने स्कूल में ऐसे प्रिंटआउट्स लेके रखे हुए सभी सब्जेक्ट्स के. आप देखिए, उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि अडेप्टेशंस के साथ क्या आपका बच्चा ये सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं. You know, there are parents coming to me, मैम अभी साइंस छोड़िए, मास कॉम तो ऐसे कर लेगा. आप खोल के तो देखिए, मास कॉम में अगर बच्चे ने सोशल स्टडीज किया हुआ है 8 तक, तो होम साइंस में ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो उसने हमेशा सुने होंगे. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से शुरू होगा, उसके बाद वो फैब्रिक्स पे, टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स पे जाएगा, पोल्यूशन पे जाएगा. बच्चे ने ये सब वर्ड्स एटलीस्ट सुने हुए हैं OBE लेवल C में या फिर CBSE मेन स्ट्रीम में. लेकिन अगर आप मास कॉम चूज करना चाहते हो, प्लीज सब्जेक्ट्स देख लो. क्या बच्चे ने कभी रेडियो, इंटरनेट ये वर्ड सुने हैं? आप बिजनेस स्टडीज चूज करना चाहते हो, इट्स अ लवली सब्जेक्ट, बट व्हाई आर यू लिसनिंग टू अदर पीपल टेलिंग यू कि मैथ्स के जैसा नहीं है, चूज कर लो. यू जस्ट हैव टू टाइप, यू नो, NIOS 10th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 आपके सामने खुल जाएगा, देख लीजिए. एम्पावर योरसेल्व्स, टेक अ एजुकेटेड डिसीजन. So to choose the subjects, download a few chapters and then choose them. Second very important factor here, please take a balanced mix of theory and practical subjects.
जिनके भी बच्चे बड़े हैं सीबीएसई में उनको पता है कि सीबीएसई में भी यू हैव द सब्जेक्ट्स के जो ऑप्शंस हैं उनमें प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, आई गिव यू एन एग्जांपल. पेंटिंग 10th और 12th दोनों, यस 70:30 है. 30 is theory, 70 marks is practical. Data entry operations में it is 60-40, 40 is theory. सोचिए अब इसका आगे भी मैं आगे अभी थोड़ी देर में आऊंगी एआई के उस पे प्रैक्टिकल्स को. तो जो ये वाले प्रैक्टिकल्स हैं दे आर वेरी इजीली डूएबल. ओके, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू. हम पढ़ा क्यों रहे हैं? 2 पॉइंट्स हैं हमारे. एक उसको पास करना है, एक उसकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, एक उसका मेंटल ग्रोथ होना चाहिए. Practical subjects are a wonderful means of both of them. I'll come to that in a while. पास करना भी easy है और at least जितने practical के subjects मैंने देखे हैं they're wonderful for mental growth also. I'll explain what I meant just now in a while. So your subjects like suppose आपने language English choose की है, so हम लोग मैं जो common subject suggest करती हूँ 10th में, those are English, painting, होम साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन. ये तो आप पक्का करो. यू नो इट्स एक्चुअली अ शॉर्ट थिंग. दीज 4 सब्जेक्ट्स यू शुड टेक. जो आपका 5th सब्जेक्ट है दैट कैन बी अ वोकेशनल सब्जेक्ट गिवन यू कैन फाइंड एन एवीआई दैट हैज द कोर्स दैट यू वांट टू डू. हमारे स्कूल के बच्चे 10th लेवल तक हिंदी करते हैं. कुछ बच्चे हिंदी करते हैं, कुछ बच्चे बिजनेस स्टडीज करते हैं, कुछ बच्चे मास कॉम करते हैं. Okay, so but these 4 subjects are very easily doable. I'm putting myself out here and saying these 4 subjects are doable. Common misconception that we hear is that whenever painting सुन के ना सब बोल देते हैं मतलब I have my child can't paint, but that is exactly the point we are trying to address actually. ठीक है ना? So once you go through the curriculum and once you understand, it has got nothing to do with painting. It is actually history of painting. It is just like a story. We have that slide, huh? Actually, we have a slide. I'll show you in a minute. So, acha, okay, here. Ekam K has a genetic condition called Rubinstein-Tabby syndrome, because of which her thumbs as well as her big toes, uski bones fused हैं. She can't use. So, हमने उसको adapt. उसने बहुत अच्छे से लिखती है. But we knew from the very beginning, so we were able to adapt. लेकिन अगर आप उसको take the correct answer दे दो, she could not do this. Circle the correct answer, she could not do this. It was so difficult for her. I opted for painting. I wish I had, उसका जो painting का practical था, मैं photo खींच के रखती. It blew my mind completely. जो उसने practical में किया. I'll come to that in a minute. उसने कैसे किया? That I think is a very important factor that we need to discuss. उसके बाद third thing, please download a few question papers. पिछले साल के question papers download कीजिए. उसके बाद decide कीजिए कि क्या इस तरह का format question paper का क्या मेरा बच्चा attempt कर पाएगा. So these are the 3 suggestions I always give every parent who comes to me. Please download a few chapters before choosing the subject. करिकुलम शुड बी जो आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिक्स होने चाहिए और कुछ क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए. उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी मुझे क्या सब्जेक्ट्स चूज करना है. Actually, more importantly, the biasness will go away. The biasness that my child cannot do this, my child cannot do that. But more importantly, that biasness will go away because what we normally think of painting and when we hear 70 marks is practical is you're expected to draw Mona Lisa. No, you're not expected to draw Mona Lisa. Yeah, but that is a general misconception which I have seen. So, but that is not the case. So hence it is very important. See, it just all these things that we have mentioned here is something. If somebody is attending 10th or 12th, this is something they will know. Let's say they have 10 chapters in CBSE, then they will know okay which chapter carries what weightage, how much marks. So the only thing is that because मतलब हमारे बच्चे के साथ वो करते नहीं हैं. मतलब it is deemed unimportant and deemed unnecessarily. And biasness will kick in. अगर मतलब बच्चे CBSE में पढ़ रहा होगा, then parents will know everything. What we trying to say here is कि हम neurotypical बच्चों के लिए हम blueprint लेते हैं ना, इस मॉड्यूल का इतना वेटेज है, उस मॉड्यूल का उतना वेटेज है. तो yes, जब हम पढ़ाएंगे 10th और 12th का करिकुलम पढ़ाएंगे तो उस समय it will be for mental growth.
But when we come to exams, you know, we should employ all the techniques that we employ for a neurotypical children. इसका वेटेज है, ये चैप्टर का ज्यादा मार्क्स नहीं आता, इसको छोड़ दीजिए. वो सब टेक्निक्स NIOS में भी एम्प्लॉय की जा सकती है, की जानी चाहिए. हम हर बार करते हैं. If I am starting a new subject, suppose मेरे पास कोई बच्चे 2 आ गए हैं, अगर एक भी आ गया है, वो पेरेंट्स आर वेरी कीन यही सब्जेक्ट करना है, and then I have to adapt the curriculum. What I will do is, the first thing I do is download the question papers. I go through the question paper format first. Okay, I can take an example of English and explain this to you. Actually अभी करते हैं. इंग्लिश का बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि एज अ सब्जेक्ट मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए. 28 चैप्टर्स हैं. चैप्टर्स पता है कौन से हैं? सरोजनी नायडू की पोएम है, जवाहरलाल नेहरू का लेटर्स टू माय डॉटर है, 12th में सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी में से चैप्टर है. तो जब मैंने पहली बार देखा था, आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई वाज पेट्रिफाइड. इट वाज वेरी क्लियर इंग्लिश नहीं करना. And then I downloaded the question papers और सारा क्लियर हो गया. क्वेश्चन पेपर्स में 70 ग्रामर है और 30 का वो है लिटरेचर. ग्रामर इज वेरी डुएबल. ग्रामर का क्यों डुएबल है? क्योंकि अगर आपका हर साल 5th क्वेश्चन एक्टिव पैसिव है, तो एवरी ईयर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी एक्टिव पैसिव. देयर आर अ टोटल ऑफ 7 to 8 concepts which are doable, and a child I think I'll stick to that. The grammar is very easily doable. अब आप स्टडी करो 30 वाला. आपके पास 2 मोटी किताबें हैं. They should be right there somewhere. I'll show them to you. इतनी मोटी बुक्स हैं, लेकिन उसमें से 30 मार्क्स आना है. अब जब मैंने क्वेश्चन पेपर स्टडी किया तो क्या पता लगा, 30 में से 15 पोएम्स के लिए है. पोएम सिर्फ 6 है, तो 15 मार्क्स का 6 चैप्टर्स में 15 मार्क्स आ गए. So अभी क्या बच गया आपके पास? 21 चैप्टर्स जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. अगर उसको भी अच्छे से स्टडी कर लो तो 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग 10th में 28 चैप्टर्स नहीं करते, हम 11 चैप्टर्स करते हैं और हमारा 30 मार्क्स का थ्योरी प्रिपेयर हो जाता है और बाकी प्रैक्टिकल है. सो प्लीज स्टडी द क्वेश्चन पेपर्स. अच्छा एक बात बताओ, ये सब कुछ मैं अपनी छोटी बेटी के लिए भी कर रही हूँ, बट फॉर सम रीजन एकम के लिए या हमारे बच्चों के लिए करने की जरूरत नहीं है. यू नो, कुछ भी कर लो. एक चैप्टर हो गया, अगला कुछ थोड़ा सा कर लो, एग्जाम में देखी जाएगी. इफ यू प्लान फॉर अ न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन, व्हाई शुड वी नॉट प्लान फॉर द न्यूरोडाइवर्स वंस? दोनों 10th कर रहे हैं ना. आई होप आई एम पुटिंग माय पॉइंट अक्रॉस. आई एम जस्ट सेइंग इट इज अ वेरी वेल प्लान्ड. जैसे छोटी वाली के लिए मुझे उसका एजुकेशन प्लान करना पड़ता है, एक एकम के लिए भी मैंने प्लान किया. And it can be done. What we do with rest of. Okay. So again the same thing. I think we had the slide. The upper part is the same from last time. The lower part is different. आप यहाँ पे जाके स्टडी सेंटर चूज कीजिए. ये आप इनपुट दोगे तो आपको स्टडी सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी. We've done this earlier. Let's forget this. Now this is a very important part of the presentation today. What is a PCP? Now this is something जो मुझे पता लगा जब मैंने ऑलरेडी 2 या 3 बैचेस हम लोग, आई थिंक नहीं, सेकेंड ग्रुप में पता लग गया था. जब हमारा सेकेंड ग्रुप गया 10th के एग्जाम देने के लिए, हमें ये बात फर्स्ट ग्रुप में पता ही नहीं लगी, क्योंकि कोई स्टडी सेंटर आपको नहीं बताएगा. आप जाके बोलोगे. अब खैर बहुत स्टडी सेंटर्स को भी पता लग गया है कि पेरेंट्स बिकॉज ऑफ वेबिनार्स एम्पावर हो गए. पहले स्टडी सेंटर्स पीसीपीज को मेंशन ही नहीं करते थे. पीसीपी इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम. जब हम लोग बीएड करते हैं या कोई और हायर एजुकेशनल हायर कोर्स करते हैं, इग्नू से करते हैं डिस्टेंस मोड में, तो क्या कंटैक्ट क्लासेस सुनी होंगी अपने. बीएड में आपको शायद 2 महीने के लिए कंटैक्ट क्लासेस के लिए जाना पड़ता है अपने स्टडी सेंटर में. दिस इज दैट पर्सनल कंटैक्ट प्रोग्राम. नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? पहले लेट्स डू दिस. फॉर एवरी थ्योरी सब्जेक्ट एंड AI, that is your study center. AI is your study center. For every theory subject, your study center is supposed to give you 30 hours of personal contact program. But you have to ask for it. If you don't ask for it, you're not going to get a single hour. मेरा ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है. ऑल ओवर इंडिया से लोग कंटैक्ट करते हैं. जब हम उन्हें बात बताते हैं, जब वो स्टडी सेंटर में जाते हैं
तो भी स्टडी सेंटर वाले इनिशियली इग्नोरेंट बिहेव करने की कोशिश करते हैं, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो आप प्रोस्पेक्टस में से मेरे पास वो है, वो पोर्शन की मैंने फोटो खींची हुई है, आई फॉरवर्ड इट टू पेरेंट्स एंड देन टेक इट टू द स्टडी सेंटर और सिंपली गो टू रीजनल सेंटर। स्टडी सेंटर क्यों करना चाहेगा ना, why would they want to waste their time in PCPs if they can get away with it? वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला, अगर आप होना अगर आप नहीं जानते, if you are not empowered, at every step of the way you're going to find people who are going to exploit you. This is the biggest exploitation that happens in secondary and senior secondary, so please be aware of it. But the moment you go and ask for them, सब चौकन्ने हो जाते हैं और सब करते हैं। So having said that, अगर आपका स्टडी सेंटर मान गया है तो आप उन्हें कन्विंस कैसे कर सकते हैं कि आप पढ़ाइए मत, आप 30 आवर्स मत दीजिए, आप 10 आवर्स दे दीजिए, आप पढ़ाइए मत, लेकिन हमारा बच्चा जो डाउट्स लेके आएगा एटलीस्ट वो क्लियर कर दीजिए। मेरे एक्सपीरियंस में जैसे ही स्टडी सेंटर्स को ये बात बोली जाए उन्हें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पता है टीचर्स को करिकुलम तो पता ही होता है, अगर बच्चे सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए जा रहे हैं वो अब मान जाते हैं। The most important thing that I want to tell you today is this, very, very, very critical. Now, this is why I said the practicals are doable. आपका पेंटिंग का प्रैक्टिकल है 70 मार्क्स का है, उसके लिए आपको 5 PCPs मिलने वाले हैं। The 5 PCPs are your summative assessment. All the teachers here, all the parents will know what formative and summative is. I'm sorry. There are 2 types of assessments, formative and summative. आपका टर्मिनल्स, हाफ ईयरली, ये सारे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, और जो फाइनल एग्जाम होता है आपका समेटिव असेसमेंट होता है। तो समेटिव तो 10th और 12th में भी होने वाला है, जो NIOS एग्जाम लेने वाला है। These 5 PCP classes are your formative assessments. Just by attending the PCP, this is the golden line of today. Just by attending the PCPs, you score 35 marks. 50% of the practical marks are allotted to these PCP classes. ये कोविड ईयर चल रहा है, सारे स्कूल्स बंद हैं, लेकिन अभी भी जब हमारे स्टडी सेंटर को हमने बोला, अभी आप सबको पता होगा अक्टूबर के एग्जाम सडनली अनाउंस हो गए, इट वाज ड्रॉप लाइक अ बॉम्ब, यू नो, सडनली ऑन 4th of September we got the वो नोटिस आया था कि 27 September से प्रैक्टिकल्स चालू हो रहे हैं। I got up to my study center, tomorrow we have a first PCP. You can't give us 5, give us 2. You have to give us at least 1, because that PCP is going to amount for 35 marks. पास तो में ऐसे ही हो गया। Okay, one very important factor, 10th में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होता है। 12th में जाके आपको लेट होते हैं आपके मार्क्स, लेकिन 10th में, I hope everybody got that, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होता है। तो अगर आपने PCP अटेंड कर लिया प्रैक्टिकल पेंटिंग का, तो 35 मार्क्स में तो आप पहले ही पास हो गए। Now, this is the part where you're clearing the exam. But having said that, जब हमारे सारे बच्चे मिलके एक PCP के लिए जाते हैं, वहाँ पे the amount of learning, I taught Ekam, our art teacher taught Ekam in the school. We have an art teacher who teaches our students. But when these students go to Amar Jyoti, they sit with other students from other schools and attend the PCP. I don't know what miracle happens. All I can tell you is miracles happen. The amount of knowledge, the amount of absorption that happens there, for some reason, is much, much higher than what happens in our school. So PCP is a wonderful opportunity for social interaction, for, you know, bonding with the teachers of that school, क्योंकि यही teacher जो PCP लेगा, यही आपका practical exam भी लेगा. So more often than not, आपके practical exam में 5 questions आएंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे. और अगर यही टीचर आपको प्रैक्टिकल का PCP कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको वही सिखाएगा जो वो एग्जाम में देने वाला है. Why? Because PCPs are supposed to happen just before the final exam. So अगर हमारा प्रैक्टिकल सपोज पेंटिंग का, मेरा ख्याल 10th का स्टडी सेंटर्स डेट चूज कर सकते हैं. आई थिंक हमारे स्टडी सेंटर ने 1st October चूज किया है. तो जस्ट बिफोर द 1st October, the 5 days before that should be the PCP days. होना ये चाहिए. तो ऑब्वियसली वो जो टीचर है वो वही रिवाइज कराएगा, वही सिखाएगा जो वो एग्जाम में देने वाला है. So please keep in mind, please go and ask your study center, आप PCPs कब करोगे? The moment you say these golden words, वो अपने आप करने लग जाते हैं. So the responsibilities of AI we're discussing.
they have to first give you a schedule of the PCP class. Another very common thing that happens, मैम हो गया, आपको पता नहीं लगा क्या? ऐसा अलाउड नहीं है, उनकी जिम्मेवारी है. Please note something, for every student that a center enrolls, study center, NIOS उनको पैसे देते हैं. OBE के लिए स्टडी सेंटर को NIOS को पैसे देने पड़ते हैं. I think it's 20,000 for 5 years. But for secondary and senior secondary, NIOS pays the study center. हर स्टूडेंट के लिए उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है. सो उनका काम है ये करना, उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना ये उनका काम है. सो प्लीज एम्पावर योरसेल्फ. दे कैन नॉट से हमने कर दिया PCP, आपको पता नहीं लगा. आप पूरे हक से कह सकते हैं मेरे लिए दोबारा कीजिए, मुझे दिखाइए आपने स्केड्यूल कहाँ रिलीज किया था. ओके. सेकेंड, दे विल गिव यू दिस PCP. उसके बाद आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टडी सेंटर में कंडक्ट होंगे अगर आपने एक सेट चूज किया है. कुछ पेरेंट्स को पता नहीं होता या कुछ एरियाज में सेट सेंटर्स होते नहीं, तो उन्हें एक नॉर्मल AI चूज करना पड़ जाता है. इन दैट केस आपका AI पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, लेकिन नहीं सॉरी थ्योरी एग्जाम होगा, नहीं सॉरी प्रैक्टिकल होगा. आपका AI पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, थ्योरी के लिए आपको कहीं और भेजा जाएगा किसी और सेंटर में. इसलिए मैं स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, आई ऑलवेज रेकमेंड प्लीज चूज अ सेट सेंटर, स्पेशल accredited institute for the education of the disabled. अगर आपसे आपके घर से थोड़ा दूर भी है, हाँ जी, डिसएडवांटेज, अगर आपके घर से दूर भी है तो भी उसको चूज कीजिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ एग्जाम भी नहीं जाना है वहां पे. तो सेट हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस. देन दे विल आपको OBE में मैंने बताया था करिकुलम वही चूज करेंगे, एग्जाम वही लेंगे, चेक वही करेंगे, मार्क्स वही देंगे. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. जो आपका AI है वो सिर्फ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स को इवैल्यूएट करेगा और ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स. This is a word that you're hearing for the first time. You will hear for the first time once you come to secondary and senior secondary. Tutor marks assignments are a set of 6 questions per subject that a child has to write by hand and submit to the study center. अगर अप्रैल का आपने, if you remember block 1 and block 2, block 1 is the April exams and block 2 is the October exams. सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में हमने फर्स्ट वेबिनार में डिस्कस किया था, एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2. सो लेट्स सपोज आपने अप्लाई ब्लॉक 1 के लिए किया हुआ है. ब्लॉक 1 विल हैपन इन अप्रैल. आपका वैसे तो आपको सारे मैसेजेस SMS भी आएंगे, और आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है, जो आपका आपने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका पासवर्ड और आपको एक पासवर्ड मिल गया था, यूजर नेम पासवर्ड मिल गया था, जैसे ही आप वो एंटर करते हो आप अपने स्टूडेंट के स्टूडेंट पोर्टल पे चले जाते हो, वहां पे भी रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं. बट आई एम स्टिल टेलिंग यू दैट फॉर अप्रैल अराउंड जनवरी you will be expected to submit your TMS, and around February you will be expected to submit your examination fees. OBE में logistics बहुत कम है. OBE is far easier to transact, but NIOS the logistics are higher. So what we have discussed so far is आपने registration किया, that will happen in the next slide also. आपने registration किया और आपने एग्जाम दिया. इन दोनों के बीच में कहाँ पे इंटरेक्शन आपका होगा? एक TMA के लिए होगा और एक एग्जाम फीस के लिए होगा. आपने जब एडमिशन ली, जो आपका 1300 to 2000 का जो आपका अमाउंट आया, वेरिंग बिटवीन 1300 and 2000, that is for your registration and your books. उसके बाद आपको एग्जाम फीस भी देनी पड़ती है, which is 150 for a theory subject and 250 for a practical subject. So your registration is valid for 5 years, लेकिन आप एग्जाम तभी दे पाओगे जब आप जिस पब्लिक एग्जाम के लिए आपने एग्जामिनेशन फीस भरी है. Again, a very very common mistake that happens. हमको एग्जाम देना है, एग्जाम फीस तो आपने भरी नहीं. ये मिस्टेक इसलिए होता है क्योंकि जो हम अपने न्यूरोटिपिकल बच्चों के बारे में हमारा जो डिसिप्लिन होता है, we talk to the teachers, we are aware of the date sheet, we are aware of the curriculum. For some reason we don't do that with the neurodiverse children. मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ, इनफैक्ट हमारे स्कूल में रूल है, हर मंडे को प्लीज हफ्ते का एक दिन सेट कर लीजिए,
हफ्ते में एक बार एटलीस्ट अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके सारी नोटिफिकेशंस पढ़ लीजिए. एग्जामिनेशन फीस कोई एक वीक के लिए नहीं होता, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ फुल मंथ. बार बार नोटिफिकेशन आती है, आपका लास्ट डेट आने वाली है, आपकी लास्ट डेट आ गई, जस्ट 1 वीक लेफ्ट, उसके बाद भी पेरेंट्स मिस कर देते हैं बिकॉज आप वेबसाइट पे बार बार जाते नहीं हो. सो एग्जाम फीस अगर आपने नहीं दी होगी तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे. TMA was not important till last year. This year it became critical. Why? Because exams were cancelled. 1920 and 19 the exams were cancelled. तब हमारे बच्चों का जो क्लियरिंग है वो TMA के बेसिस पे हुआ था. And of course mistakes happen. I keep glorifying NIS very much. I really think it's a beautiful system. But बहुत बड़ा सिस्टम है, उनसे गलतियां होती हैं. अप्रैल के एग्जाम्स में मैं और जोशुआ बहुत रजिस्ट्रेशंस करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के पेरेंट्स के. सो वी डू अबाउट 100 रजिस्ट्रेशंस फॉर एवरी पब्लिक एग्जाम, और उतने ही सभी बच्चों के हम एग्जाम फीस भी भरते हैं, उन्हीं बच्चों का हम TMA भी सबमिट करते हैं. This year when the exam got cancelled in April, the marking was going to be done on the basis of TMA. Of all the students that I had helped, only 2 students got left behind because the study center did not upload the TMA marks. Guess who the 2 students were? One was Ekam and one was my other student in my school. So I was able to benefit the whole world, but my own daughter suffered. But that's okay. It's a huge system. कभी कभी तो वो भी गलती करेंगे. Okay, so I hope everybody is clear on TMA. TMA is a very simple document जो आपको ruled paper के ऊपर लिख के देना होता है. हर subject के 6 questions होते हैं. You have to attend them, and these are submitted to the study center, and the study center marks them. So 10th और 12th में आपका क्या additional words आ रहे हैं? अभी तक एक TMA आया है और एक exam fees आया है और एक PCP भी आया है. All these words were not there in OBE. So are we clear on what AI is supposed to do for you? This is a very important slide. Parents को ये पता होना चाहिए. अगर उन्हें पता होगा तो वो जाके मांग पाएंगे. And if you ask for a PCP, every center will give it to you. Okay. How to interact with the accredited institutions? Slightly different. OBE में ये slide थोड़ी different थी. Please note this. Very important. Practical PCP classes account for 50% of the practical marks. Data entry operations का 60 marks का practical होता है. 50% is 30. So 30 marks, the moment you attend these PCPs, you get 30 marks. So 50%. Okay, how to choose a conducive AI? What does that mean? Check the subject availability. सभी AIs के पास सभी सब्जेक्ट्स नहीं होते. अगर आपके पास साइंस लैब नहीं है तो आपको NIOS साइंस के एक्रेडिटेशन नहीं देगा. So please choose your subjects first. हमने इस स्लाइड में देखा था आपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज किए. सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद आपको फिर एक ऐसा स्टडी सेंटर चूज करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट्स ऑफर करता है. Just a minute. The staff of course has to be good, and trust me, this is something you can make out very clearly. जब आप पहले दिन ही उनके पास गए हैं, how they interact with your student, how much of वो flexible कितने हैं. अगर आप उनसे कह रहे हैं कि मैं अपने स्टूडेंट को लाना चाहूंगा आपके पास, I would like to bring my student to attend a few classes. I would like him to get acclimatized to the area. I would like him to get used to the teachers. इस बात पे उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है. मैं सब पेरेंट्स को ये हिंट बोलती हूँ, आप पहले दिन ही जाके स्टडी सेंटर में ये पूछिए कि मैं अपने बच्चे को आपके पास लाना चाहूंगा एग्जाम से पहले, उनका रिएक्शन क्या होता है. इसी से आपको पता लग जाएगा कि वो कितने हेल्पफुल होने वाले हैं. एंड बेस्ट एग्जाम सपोर्ट, I'll give an example here. I think I've been speaking about Vivek quite a bit in earlier webinars also. Very, very high performing autistic. He is a pro at Carnatic music, maths, science, Sanskrit. He does these subjects. Study center gaya, Amarjyoti tha. I was there with my students. That's how I met him actually. He'd come with his mother, a wonderfully empowered parent who had done all the required things. She had been bringing her to Amarjyoti regularly. Vivek was comfortable with the teachers. He was comfortable with the lab.
He knew the practicals that were, उस दिन जो 5 practicals आए थे, he knew them by heart. Maths में practicals पता है कैसे आते हैं? Pythagoras theorem को करके दिखाओ. You know, they give you some papers and you have to prove Pythagoras theorem. I remember that was one of his questions. And for some reason, he had a meltdown that day. This very high performing autistic who was comfortable with the place and who knew the subjects had a major meltdown. मतलब he was thrashing around. We didn't know क्या करें उसके साथ. There was a teacher there. I can actually name her. She sat with him. She took him to the other room. She sat with him. We calmed him. We did everything we had to do with him. But by that time, practical का time खत्म हो गया था. This lady said, "That's perfectly fine. Let him start the practical now. I will sit here alone for the next 3 hours." That is what I mean by exam support. So, और ये बातें बहुत easily पता लग जाती है जब आप पहले दिन जाके politely से लेकिन firmly questions पूछिए study center से और आपको पता लग जाएगा कि आपको ये facilities मिलने वाली है कि नहीं. Please acclimatize your student. This is most applicable to the parents in the webinar today because your students are on the spectrum. Demand the schedule for practical classes, demand, but please do it politely. आपका हक जरूर है, लेकिन politeness पे भी और respect पे भी उन teachers का हक है. So yes, demand it, but do it politely. Attend the classes diligently. Very, very, very important. पहली बात तो सीधी बात है, सिर्फ attend करने से आपको 50% marks मिल रहे हैं, तो आपको करना ही चाहिए. लेकिन जो mental, like I said, I've seen miracles happen on the PCPs. क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ बैठ के अटेंड कर रहे होते हैं. Okay, I am still not done with even half. I'll go a little faster. Demand sample TMAs and project files. Again, please take this as a takeaway. आप उनसे मांग सकते हैं, पूरे हक से मांग सकते हैं. प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि आप प्लीज हमें एक सैंपल दिखा दीजिए. ये प्रोजेक्ट नहीं है, या प्रैक्टिकल होना चाहिए. प्रैक्टिकल फाइल्स. जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको उस दिन एक फाइल भी सबमिट करनी होती है, पोर्टफोलियो. दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी. All CBSE subjects also, wherever you have a practical subject, you have to submit a portfolio. So, but then you're not aware, no? So you can go and ask the study center, please give us sample portfolios, sirf dikhane ke liye. And they're supposed to show it to you. Hanji? Time ho raha hai. I'll go faster. Timely submission of scribe approval form. Again, major difference between OBE and secondary and senior secondary. OBE में आपको सेंटर को जाके बताना है, स्टडी सेंटर को हमें स्क्राइब चाहिए. यहाँ पे स्क्राइब की एप्लीकेशन रीजनल सेंटर में दी जाएगी और अभी भी वो ऑनलाइन नहीं हुई है. ऑनलाइन हो जाएगी शायद बहुत जल्दी, लेकिन मुझे लगता है जब वो ऑनलाइन हो जाएगी डिसएडवांटेज होगा हमारे लिए. बट एनीवे, राइट नाउ द एप्लीकेशन फॉर स्क्राइब हैज टू बी गिवन physically at the study center and it is given between the practical and the theory exam. जब आपका practical exam हो जाता है, फिर आपको theory का hall ticket आता है. Okay, these are logistics you need not go into, but please keep in mind that accredited institution के साथ आपको तालमेल बना के रखना है slide scribe के लिए. Check whether practical mark is inclusive of attendance or not. आपको यहाँ 50% marks मिल रहे हैं ना, study center देता नहीं है. आपको जाके बताना पड़ता है कि मुझे पता है कि आपको देना है मुझे मार्क्स. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. चेक प्रैक्टिकल एग्जाम स्केड्यूल. प्लीज चेक करते रहिए. यस, यू कैन डिमांड द स्केड्यूल, लेकिन अगर निकल गया और आपने जाके उसके बाद जितना, लाइक व्हाट हैपेंड विद एकम, आई जस्ट टोल्ड यू, her TMA marks were not uploaded by the study center. जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद I know all the top people. I know the regional director. You know, we're very close friends. Even then she could do nothing about it because exam release or result release हो चुका था. So अगर एक बार हो गया है, अगर आपको practical हो गया है या TMA हो गया है या PCP हो गया है, तो हो सकता है study center आपकी help कर पाए, हो सकता है ना help कर पाए. So please be conscious yourself. Please keep checking the study center's website, or you know, most study centers, again mandatory, study center is supposed to set up a WhatsApp group of the students where they're supposed to upload the schedules. So howsoever you do it, but please be aware that it is your responsibility to know when the TMA has to be submitted, to know when the PCPs are happening, and to know when the practical is going to happen. अभी जब NIOS ने practical का date sheet release किया है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि
जो पेंटिंग का प्रैक्टिकल है वो 27 और 3 अक्टूबर के बीच में होगा। उन्होंने बोला है 27 और 3 के बीच में होगा। उसमें से हर स्टडी सेंटर अपना डे चूज करेगा। तो अगर आप स्टडी सेंटर के टच में नहीं हो, आपका प्रैक्टिकल छूट जाएगा। And then the study center is very liable to say, I'm sorry, there's nothing we can do. And who suffers? Your child suffers. So please be conscious yourself and please stay touch in them. OBE में आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन the logistics involved in 10th and 12th is much, much higher. And you should be aware. Now this is the parents. This is for the parents. यहाँ study center का खत्म हो गया. आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपको बुक्स आ गई, अब आपको क्या करना है? ये मैंने OBE में भी लिखा था, यहाँ भी लिख रही हूँ. प्लीज जल्दी मत कीजिए. The number of parents who come and tell me कि आज एडमिशन हो गया, अगले साल 5 सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए. I think almost every parent comes and tells me that. Don't listen to it, and as parents, please don't do it. आपको एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिल गया है, जिसको एक ट्रांसैक्ट करने के लिए आपके पास 5 साल है. 5 साल कभी कोई बच्चा नहीं लेता, लेकिन 2.5 to 3 years तक बच्चे जाते हैं. So do it at your own pace. Do it at the child pace. Don't do it to clear the exam. Do it for mental stimulation. ये डायलॉग नहीं था, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा. बार बार मैं हर पेरेंट को बोलूंगी, इतने इससे अच्छा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम आपको नहीं मिलेगा. हम हर समय भागते रहते हैं, इसके बाद कौन सी बुक करें, इसके बाद क्या करें. आपको सरकार ने दे दिया बहुत प्यारा स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल फाइनाइट करिकुलम. प्लीज टेक योर टाइम. Do it for your child's advantage, not to clear the exam. Exam clear हो जाएगा. Study the marking scheme, sample question paper, blueprint. The same way that you would do for your neurotypical child, please do it for your neurodiverse child also. Download previous year question papers and study the pattern. मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम क्लियर करना तो मुश्किल है ही नहीं. मतलब मुझे तो एटलीस्ट ये लगता है, एग्जाम्स क्लियर करना मुश्किल है ही नहीं. Because I have checked the NIOS question papers for a few years. I've seen, or at least I've seen the key that they use to check the question papers. हमारे बच्चों से सिर्फ key words expected होते हैं. See, Ekam is very good at English, but NIOS was उनका target audience कौन था? EWS children or the marginalized people. So जो हमारी, like my mate's daughter is also attempting NIOS. Her English is not very good. उसने मीडियम अगर इंग्लिश चूज कर लिया पेंटिंग का, NIOS उससे ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, राइट? तो हमसे भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ कीवर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. So clearing the papers is not difficult, but yes, the mental stimulation, the mental growth that you can impart to your child while you transact the curriculum is limitless. Okay, judicious selective learning, जो मैंने इंग्लिश में अभी आपको बताया. अगर 30 marks, 28 chapters 30 marks के हैं, it doesn't make sense to do all of them, ना? So study the question paper, आपको पता लग जाएगा कौन से chapters choose करने. Then these are the strategies we use. I'm going to show them also in future slides. हम summaries use करते हैं. Summary का क्या मतलब है? Let's discuss this for 2 minutes. Summary का मतलब है कि आपने question paper study कर लिए, बच्चे को पढ़ाने से, okay, I often say this. For a half an hour class that I take, I put in about 30 hours. मैंने 30 घंटे की मेहनत एनालिसिस किया होता है, तो मैं आधे घंटे की क्लास लेती हूँ. So 90% काम मेरा है, 10% बच्चे का है. So आपने स्टडी कर लिया चैप्टर, आपने क्वेश्चन पेपर स्टडी कर लिया, आपको क्वेश्चंस पता है कौन से आने वाले हैं. उस चैप्टर की समरी बनाइए, और समरी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सारे आंसर्स हो. This is something we do actually at OBE levels more. मैंने आपसे हर बार कहा है कि हमारे स्कूल के बच्चों के पास बुक्स नहीं होती, उनके पास सिर्फ मेरे प्रिंट आउट्स होते हैं, अडैप्टेड लेसन्स होते हैं. So summary is something that works very beautifully at OBE levels also. Study maps. I'm going to show you a study map and graphic organizer. CRA, I'm sure CRA नाम नहीं पता होगा, but otherwise सबको पता होगा. मैथ्स पढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या होता है? Concrete, representation, abstract. Concrete मतलब, see, I'll often have parents coming to me. मैम प्लस माइनस करना आता है, बहुत अच्छे से आता है, आप लेवल सी करा दीजिए. उस बच्चे के सामने मैंने 5 पेंसिल्स रखी और उसको बोला काउंट करके बता दो कितनी पेंसिल्स हैं, या 10 पेंसिल्स रखी और बोला 5 पेंसिल्स दे दो, वो बच्चा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ये वाला स्टेप नहीं हुआ.
सो मैथ्स पढ़ाने का या बहुत से और सब्जेक्ट्स पढ़ाने का तरीका होता है, पहले आप कंक्रीट दिखाइए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब, उसके बाद आप पिक्चर दिखाइए और उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए. Ekam had 5 pencils. I gave him 3 more. How many does she have now? So ये कैसे होना चाहिए? Ekam has 5 pencils. I have given her 3 more. How many pencils does she have? Ekam has to be able to read the question, understand that they are asking for addition, and then she has to go do 5 plus 3. वो तो last step है. पहले के steps तो आने चाहिए ना. So हम शुरू कैसे करेंगे? शुरू हम करेंगे, पहले 5 पेंसिल दी, कंक्रीट पेंसिल्स दी, फिर 3 पेंसिल्स और दी. कुछ दिनों के बाद हमने पेंसिल्स की पिक्चर्स बनाए. ये 5 पेंसिल्स आपके पास हैं, you know, और मैंने आपको 3 पेंसिल्स और दी. Can you now add them? What will she do? 5. She will keep 5 in her mind and then she will say 6, 7 and 8. That is the representation part. And then please come to the problem sum. अगर आप मैथ्स को ऐसे करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. फंक्शनल मैथ्स अपने आप हो जाएगा. रोल प्लेज इज समथिंग दैट वी यूज फॉर हिस्ट्री, SST and science. I'll show you graphic organizers. Now, okay, a story I think I've told other people. When at Ekam was still at an inclusive school when I had discovered NIOS. तो मैंने जाके उनके टीचर से पूछना शुरू किया कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं. हम लोग ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे. So one of the teachers there knew about NIOS. He started suggesting subjects to me. Now painting is one subject that I suggest to every single parent. यहाँ सुनने वाले हर पेरेंट को मैं बोलूंगी प्लीज पेंटिंग जरूर कीजिए. बहुत ही प्यारा करिकुलम है. It's something that is doable. One, it makes practical sense, yes, but this is a curriculum that most students should know about. बहुत अच्छा करिकुलम है. मुझे जब मैं अपने एकम के टीचर के पास गई, उन्होंने मुझे डिस्यूट करने के लिए पेंटिंग मत, पहली बात उन्होंने बोला पेंटिंग बहुत मुश्किल है, और उन्होंने मुझे कन्विंस करने के लिए पेंटिंग बहुत मुश्किल है, पेंटिंग की किताब दी और ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए बोला. उन्होंने मुझे बोला कि ये चैप्टर पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे पेंटिंग नहीं लेना. आप मानेंगे मैंने इसी चैप्टर की वजह से पेंटिंग लिया. ये बहुत मुश्किल चैप्टर है. ये वर्ड किसी ने नहीं सुना हुआ, ये वर्ड किसी ने नहीं सुना हुआ, ये कोई वर्ड किसी ने नहीं सुना हुआ. लेकिन this is the most difficult chapter of the painting subject. That is why I have chosen this. Sorry. This is what my students get. This is all my students get. We discuss. Painting हम ऐसे नहीं करते. मैंने आपसे कहा था पेंटिंग सारा हिस्ट्री है, हम बहुत भूमिका बांधते हैं. We do a lot of timeline. If you were to come and ask my students कि Indian painting history कैसे गई, so some of the children who were not considered capable of any academics at all, even they will tell you कि पहले murals हुए थे, wall paintings हुई थी, फिर miniatures हुए थे. I mean, what I'm saying is that it can be done. Children who did not know anything at all, within 2, अच्छा मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस है 2 महीने में खत्म हो जाता है. पेंटिंग इतना इजी है, 2 महीने में खींचना पड़ता है. So the most difficult chapter of painting, what we have done, we've made a pictorial representation. इसमें क्या हो रहा है, सभी पेंटिंग्स का नाम ऊपर है और पेंटर का नाम नीचे है. It's color coded. और इस चैप्टर में से बच्चों को पता है क्या करना है, सिर्फ ये ऊपर क्या है. This is the birth of Venus. Birth of Venus was painted by Botticelli in Renaissance style. That is the only thing they will learn. ये देखिए मैंने इसको fill in the blanks में लिखा है. The dash was painted by dash in dash style. This is the only 4 sentences the child will learn from this chapter. और आपको मैंने क्यों दिखाया है, आपको dissuade करने के लिए नहीं, आपको ये बताने के लिए कि सबसे मुश्किल चैप्टर पेंटिंग का सिर्फ नहीं, पूरे शायद 10th के करिकुलम का, उसको करना भी इतना आसान है. There is a student from Bombay. मैंने उस दिन आपको प्रथम की बात में बता रही थी, joined us for 10th. The other day we were doing a painting by, okay, a long story. I'll take just a minute. Leonardo Starry Nights, Van Gogh. एकम वैन गो पेंटर है. इंडियन हिस्ट्री भी है, यूरोपियन हिस्ट्री भी है. उनके घर में सालों से उसी पेंटर की दूसरी पेंटिंग का प्रिंट टंगा हुआ था. This child's mother told me, she actually cried that day. She said that my son identifying that print, I would have never thought possible.
When I started describing Van Gogh's style of painting, and I said he paints in blue, he immediately connected. In the middle of the class, he went across, pulled down that print and showed it to us on the thing. Artist, huh? He's severely autistic. He constantly rocks, sensory needs are very, very high. उनके घर में वो print सालों से टंगा हुआ था. But because of the way it was handled, you know, we go systematically, we build up on it. So, जो चीजें हमें लगता है बच्चों के साथ हमारे impossible हैं, NIOS वाकई possible करके दिखाता है. इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था, this is the whole chapter, this is the first chapter, Indus Valley Civilization, उसका ये art form है. This is all we do. The dancing girl का पूरा जो है वो यहाँ represented है. This is what the children will get. This is a graphic organizer. Found from, this is the height, this is the hairstyle, this is the medium. जब आप इस तरह शो करते हैं तो बच्चों के लिए करना बहुत इजी हो जाता है. लेकिन मैं बार बार एक बात बोलूंगी, हमारा कोई स्टूडेंट रखता नहीं है. They don't do rote learning. They don't have to do rote learning. आप करिकुलम को ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो कि the child understands. आपको ये दोनों slides, Joshua was telling me, are you trying to scare them off? These slides are scary, these two slides. But I have shown you the two most difficult parts of NIOS curriculum, and I've shown you how they can be done. So please, zarur kijiye. That's it. Again, my philosophy, if the child is not learning, you are wrong. The child can't be wrong. Okay, I'm going to stop. I think today was a bit more overwhelming than other days. थोड़ी ज़्यादा information हो गई. Aishali, सबकी बोलती बंद है? No, it was a very nice way, like, no, जो tips आपने बताई, how to score marks, and these are a lot of things, like, no, what we generally overlook, and these are the shortcuts, you know, that we being taking a little bit of more effort by knowing the system can help our child in such a nice way, you know. So there is this very beautiful curriculum that can really help your child. लेकिन yes, the curriculum is very expansive, बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसको अपने बच्चे के लेवल पे ला सकते हैं, modify, adapt करके, change करके नहीं. हमारा कोई स्टूडेंट कोई चैप्टर नहीं छोड़ता. नहीं, that's not true. पेंटिंग में जो सेकंड चैप्टर है उसका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो मैं छोड़ देती हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है. बट अदरवाइज मोस्टली वी डू द एंटायर करिकुलम, बट वी डू इट इन अ मैनर दैट प्राइमरीली हेल्प्स द चाइल्ड. बट अलोंग द वे अगर मेंटल स्टिमुलेशन के साथ साथ उसको सर्टिफिकेशन भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात. क्वेश्चंस? वाज देयर एनीथिंग इन चैट? चैट में क्वेश्चंस नहीं है जोशुआ से. कुछ समझ नहीं आया किसी को? या बिकॉज इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ है एंड उससे भी ज्यादा आई मीन यू हैव गॉन इनटू वेरी मच डिटेल लाइक हाउ टू सी. इसके बाद व्हाट मैम कैन यू प्लीज शेयर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होम साइंस? आई डिड नॉट नो अबाउट इट. माय सन इज गिविंग इट इन अक्टूबर. आई एम गोइंग क्रेजी. सर, कुड यू सेंड मी अ पर्सनल मैसेज? आई विल सेंड इट टू यू. आपने मिस्टर इट्स गॉन अप whoever. हाँ जी, चैट्स में बहुत क्वेश्चंस हैं. Can you do this question? I don't know who this was from. Sir, home science का ना, I really hope this guy. No. रोहितेश. Yeah. Sir, मेरे पास. Why don't you see? I don't think a whole lot of parents here are from secondary and senior secondary. So please send me a message. I'll forward the distribution to you. But otherwise, अगर आपके पास home science की book है तो first home science की जो first book है उसके end में दिया हुआ है. All subjects have 2 books. At the end of the first book, you have a sample question paper. You have marks distribution. You have the blueprint. तो home science की first book के पीछे भी है. अगर आपको नहीं मिलता, please send me a message. I'll send it to you. I wanted to know the list of SAID centers. Tried CHK on NIOS website. Site checking on NIOS website. check on NIOS website. Yeah. आपको जब there is no such list. Of course, there's a list. गौतम बुद्ध नगर. सर एक्चुअली आपको दिल्ली में मिलेगा, आपको बेसिकली यूपी में नहीं है.
तो आपको दिल्ली चूज करना पड़ेगा. But where are you from? I think you are from Noida only, right? Mr. or Mrs. Sohan. कहाँ लिखा है? अच्छा, गौतम बुद्ध नगर. ओके, वो तो आप हमें ही भेज सकते हैं, हम ही आपको बता देंगे. अमर ज्योति इज द मोस्ट, आई थिंक इज द नाइसेस्ट सेंटर फॉर एनीबडी इन दिस एरिया. All okay. Where can we Can test? we get? It is in the site which I had. Okay, now let Joshua answer. I'll have to. तो मैंने साइट पहले पिंक किया था, उसमें है वो. फिर ये क्वेश्चन पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और सब कुछ उसमें है. स्टडी मटेरियल सब कुछ उसमें है. Can we get online classes for our children? Yes, you can, but you will have to find the place where you are doing the online class. Depends on your location. But NIOS is doing their own online classes, but that is might not be adapted for our children. जो NIS की क्लासेस हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए है. वो पूरा का पूरा करिकुलम कराते हैं, एडेप्टेशन नहीं करते, which I think is going to change soon. At least that's what I've heard. Any document where we can show that, ma'am, Tina Khanna, it is there in the any document which we can show the that PCT has 50% marks for practical, that is there in the prospectus. आज हमने लिंक्स का नहीं दिया है वो. नहीं, वो पहले दे दिया. Harshali, we've sent that Yeah. links का ना, important links of NIOS, उसमें prospectus का link है. आपको कुछ नहीं करना है, NIOS 10th prospectus टाइप कर दीजिए, वो आ जाएगा, गूगल से आ जाएगा. हाँ, I think people are asking for personal. I think people are asking for personal number. मैंने last time दिया था. I'll just again put it in the chat in case you want to have questions. एक मिनट. Actually, a lot of people have contacted and they've had specific questions. It's been very nice. Okay, Mr. Mohan, my son is in senior secondary program. How many years of past year question paper should we make our son practice? We heard there was a change in curriculum. Now, the change of curriculum happened in 2013. So you can start the question paper practice from 2013. Please be clear on this. 2013 से पहले के papers मत देखिए. Okay, there is from here papers are on the NIOS website, not before. नहीं मैम, आपका 2013 से भी है. NIOS website में you even have 2012, but you can 11 start भी from है. 2011. I've seen 11 also for some subjects. So you have question papers. Should something go wrong? You have question papers from 2012. Okay, should something go wrong with the system, what is the way to raise the support request for any other issue? So it depends on what issues you are facing actually. If you've done the registration yourself and if you know how to go to the student portal, the moment you go to your dashboard, वहाँ पे एक rectangle आता है which says e-services. E-services lets you change a whole lot of things, whole lot of mistakes that you might have made. Of course, they're all chargeable. आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो NIOS जम के पैसे लेता है, पर मतलब थोड़ा it's not expensive, 125, 175, 250. 250 से ज्यादा नहीं है. But कुछ भी change करना हो, they ask for money. Okay, my daughter is going to normal school, then can she go for NIOS simultaneously? This is a question by Absolutely. Isha. Yes, you can. Divya. This is an important question. Mainstream के साथ साथ आप NIOS कर CBSE and NIOS can be joined simultaneously. Can we get online classes from your school for senior secondary? This is from Shobha said. Yes, you can, ma'am. You can please, ma'am, number दिया था, please contact. Okay, Divya, can you please share an example of study map? The one you showed was graphic organizer. I'm not very different. Study map is also a graphic organizer only. There's subsets of many graphic organizers. One of them is study map. Study map में आप photos इतनी ज़्यादा नहीं बनाओगे. Okay, आपने बीच में लिख दिया, I went for a vacation, and then उसमें ज़्यादा आपके WH वगैरह वाले questions होंगे. So it's a graphic organizer only. Send me a message. I'll send you some examples. Okay, I think how important are questions given in previous years' question papers? Are they repeated? It says not all questions are repeated, but the idea of studying the question paper is to give an understanding of what sort of questions will usually come. My experience is that the questions are not very repeated except for a few. Like for instance, I will give you. I can categorically tell you questions repeat नहीं होते. But like for instance, sir, let me give you an example. Okay, let's say if you take data entry में there is one 2 mark question, the answer for which is the same. How do you insert a pie chart, right? The steps to the question will come in different forms, right? But you will understand the fact that all they're talking about is the answer is the same. यहाँ depend करेगा आपने बच्चे को prepare कैसे किया है.
if you've taught your student to look for the keyword, when our students, yes, they have keywords for answers, but because most of my students can write grammatically correct sentences, what we teach them is to what keywords to look for in question. हम लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, आंसर्स में कीवर्ड सिखा देते हैं, क्वेश्चन को समझना नहीं सिखाते. सो बच्चे को आंसर आता होता है, क्वेश्चन गलत समझ के आ जाता है. This we also learned after our first, one of the students, Shivita, had made a major blunder. Actually, there are two things here. One is this, and then the question paper has, except for English, the question paper has questions in Hindi and in English. Okay, yeah, please. If your child is going for the exam for the first time, आपको prepare करना पड़ेगा. वो बहुत confusing हो जाता है. Every question is translated in Hindi. So अगर आपने previous years question papers download किए, आपको पहले से ये बात पता होगी. So what we do is that we make sure that जब सारा curriculum हो गया, revisions हो गई, end में हमारे revision करने का क्या तरीका होता है? We start giving them actual question papers from previous years. Our students attempt at least 5-6 question papers before they reach the examination hall. Okay, and I think Mr. Mohan, would questions be asked in the main theory exam from the TMA portions also? Sir, our experience is no. Okay, no. See, the TMA is from the theory portion, na? But you cannot expect if you're asking that whether the questions from TMA will come in the exam, no. I have not so far seen any such question. I've had a parent come and tell me, I really hope that isn't what you were saying. But I remember a parent coming and telling me, जो TMA लिखा है खाली वो prepare कर ले. TMA was only 5-6 questions and only 6 chapters. You can't take that much of a shortcut. Okay, and then where can I find the process of normal school and NIO simultaneously? I think this is from one Mrs. Isha. Ma'am, sorry, आपका question समझ नहीं आ रहा, but आपका ऐसा कोई process नहीं है, मतलब government कोई clarify नहीं करता, आप normal school भी करो और NIOS भी कर लो. That is entirely up to the prerogative of the parent. Sandhya ma'am often says कि prospectus में नहीं लिखा हुआ आप दोनों कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ नहीं कर सकते हो. तो जब तक कोई कोर्ट में नहीं जा रहा है, if somebody actually files it, तब तक करते रहो. Actually prospectus में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप simultaneously कर सकते हो, पर कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि नहीं कर सकते हो. नहीं, but actually if you read between the lines, you will be able to understand. You will be able to understand. Yes. हमने पहले भी बताया था, there are different streams. One of the streams is, ma'am said in the first webinar, is to NIOS is an option for marks improvement. So which basically means that you can do 2 times. So basically it's like, you can take 2 boards simultaneously. Yeah. Somebody is asking me, what is the advantage of doing both? And that will depend from child to child. No, listen, you misunderstood. We are not saying do both. What we are saying is that if a student is already enrolled in a mainstream, he's already in a CBSE school, और आपको लग रहा है कि एडमिशन का टाइम निकल जाएगा, 10th का एडमिशन भी तो NIS का कुछ फिक्स टाइमिंग्स है, आपको लग रहा है टाइम निकल जाएगा और अगर मैं अगले साल एडमिशन लूंगी तो उसका साल वेस्ट हो जाएगा. We are not saying consciously do both of them together. We are saying that if you're already in one system and you figure that your child will not be able to transact that system, you can choose the other system simultaneously also, so that the child doesn't lose 1 year. And another question from Pratiksha. Computers given to child for writing exams instead of scribe. Yes, you can request for computers also, and you can in fact you can take your own laptops and stuff. That provision is available, but it has to be requested. मैम अगर आपको ये रिक्वेस्ट करना है ना तो प्लीज बहुत पहले जाके कीजिए. पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, लास्ट डे जाके बोल देते हैं, एंड देन इट इज अनफेयर टू द स्टडी सेंटर. दे विल हैव टू फिगर आउट देयर लॉजिस्टिक्स ना. सो पहले बता दीजिए. Any other question? Anybody? Any other question? Please raise your hand. We can unmute you. You can unmute. Unmute yourself, Rohitesh. Yeah. So I got from Nimans, I got my son letter which says he can have extra time. Okay. So I need to submit it to the regional center, I think. Yes, you are right, sir. You have to submit that request to the regional center. Yes. Sir, आपने बोला है कि आपका बेटा अक्टूबर का एग्जाम he is taking exams in October, right? Right. So what will happen is अभी आपका practical का hall ticket आजकल में आ जाएगा. It will come any day now because the practical exams have been scheduled. Once you've taken the practical, उसके बाद आपका theory का hall ticket आएगा. जब आप request लेने जाएंगे study regional center में, आपको वो theory का hall ticket का photocopy लगाना पड़ेगा. Okay. So you do this after the hall ticket comes. आपको sir basically I'll tell you the document. Okay.
आपका एक there is a form in the NIOS website that has to be filled in, okay, which is requesting for specific relaxations. Then you will need to carry your disability certificate of the child, indicating that the child needs and the reason for relaxation, the child has some issues, right? And then you will need to carry the photocopy of the I-card. You need to carry a photocopy of the hall ticket. You need to carry the name of the person. You need to carry the Aadhaar card of the scribe. No, he's not saying. No, I'm not asking. Okay, sorry. I'm sorry. Extracurricular scribe नहीं चाहिए. Oh, but so you need to take all this with you and you But have to submit. disability certificate I don't have, ma'am. But so Nimans has given say him earlier evaluation saying he's autistic, but I don't have a disability certificate. But they have. So you have the IQ report. Do you have IQ report? Yes, yes. कहाँ that से is है? fine, sir. No, but कहाँ की है आपकी IQ report? Is it from a government Nimans. institute? Nimans. हाँ, ठीक है. That is fine. Then you can take. Then you Now, can take the IQ report. Remember during the presentation, I told you that when it actually becomes online, it will be a disadvantage. You know why? Because अभी जब आप physically जाओगे उनके पास, आपके पास DC नहीं है, disability certificate नहीं है. The person might, trust me, this what sir is telling you, it is not there. You're supposed to submit a disability certificate only. But more often than not, these people will accept the psychological assessment also. But once the online thing happens, फिर हम ये नहीं कर पाएंगे. Then we'll have ये to. उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें लिख के दिया है. मैं वही सर से बेसिकली सर In all probability, it should work. अगर आपको लगे तो आप प्लीज मुझे भेज दीजिए, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं. अगर आपके पास IQ रिपोर्ट है saying that there is spectrum में है, autism में है, then I think there should not be a problem. It should be able to work. अगर government organization है, then they will pay. This medical certificate I downloaded from the NIO site itself, and that has the entries for verbal IQ, performance IQ, and global IQ. Sir, that is वही बोला था sir. So that is the form that you need to fill in and send. But as a supporting, see, I can also go and ask for relaxation, right? Any student can go and ask for relaxation, but you need to give specific reasons why you are asking for relaxations, and you need to submit proof for that. Yes. So proof. Okay. So there your is IQ report. So your IQ report is the proof. Okay. All right, sir. But anyway, I'll just send you both. Just have a look and see if it's. Yes. See, the reason I said, sir, send it to me. I have no authority. Yeah, I get that. No, I'll not hold you responsible. No. The reason I said send it to me is that I'll forward it to somebody in NIOS and I'll confirm it from there. Fine. Okay, and I think there's one question from Pratiksha. She asked before, our laptop is allowed. Any restrictions for this? Is this has to be told to study center? Ma'am, yes, you need to tell the study center beforehand that you're going to be carrying your laptop. And I think if you read the relaxations, you should not have any softwares installed in it. But that is something that you can check with the study center and to see if it is okay for you to use your own laptop. Ma'am, very clearly, this is study center dependent. तो थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपका उनके साथ रिलेशंस कैसा है. आप उनके साथ जाके अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि वो मना कर सकते हैं चाहे तो. There are lots of loopholes. They can say erase the whole hard disk. That is something is written in the prospectus कि आपके उस समय कोई और सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे. तो वो ऐसा कुछ बोल सकते हैं. तो आप प्लीज जाके एक बार उनसे बिफोर वेल इन टाइम बात कर लीजिए. And I think that if your child actually needs it, the study center should agree to it. Okay, next I think Mrs. Bhagyarekha. Yeah, please. Hello, madam. Yes. My son is in 12th. He's slightly mentally retarded. Mild retardation is there. Because of this COVID, he could go through the 10th class, but I don't know how he's going to do his 12th. I mean, senior secondary. I have registered already, but I think I need some help from you. You're most welcome, ma'am. But what subjects have you chosen? The same thing, the 4 subjects which you said now, and one, I think, business. Studies. Ma'am, please take my word for it. When 10th, okay, he cleared because exams were cancelled, but you must have studied. You must have done some studying, no? But he's retarded, light retardation is there. So, and slow learner, he's a slow learner. So slow learners, the NIS, in my opinion, was actually made for slow learners. So we have students who are severely,
By the way, it is no longer called mental retardation, it is now called intellectual deficiency. You know, But your But, question is that what sort of help you are looking for, ma'am? adaptations, I think. Okay, the one By thing the I can tell you by is your slide, I can see that you are teaching very comfortably to the students and very nicely so that they can grasp. Here, the education is just to read the lines, even if he can understand or not. So I thought maybe ma'am, where are you based? I am from Hyderabad. So, ma'am, the one thing that I can actually teach you, the best thing I can teach you is how you can, teach him. So, whatever the teacher might be doing, you know your son best. Yes, madam. Teacher might be doing line by line. Like, Yes. ma'am, just keep one thing, please, from today's webinar. Parents, please remember. I said for every half an hour class, I study for at least 30 hours. The bare minimum I'm talking about. Because, a painting, let's say home science, there's one chapter. We are doing in 12th, we're doing a home science, we are doing the chapter of methods of cooking. Yes. I don't think there's any post left on the internet that I've not read. I've completely prepared myself, but then because the questions will be coming from the book, I have adapted those lessons, but in a manner that becomes very easy. So an entire page of, there's a method of cooking dry, there's a cooking by moist heat. वहाँ पे 6 pages है. हमने उसको मेरा ख्याल इतना 7 or 8 lines में कर दिया. So you can adapt best, even if the teachers are not doing it. Please, you give it your shot and get in touch with me. I'll teach you how to teach him. Okay, madam, that is fine. I'll try my best to teach my son. And trust me, the way I'm presenting myself, this is how I do my classes. I can give you a link and all of you can attend one of my classes. It seems as if I'm having a lot of fun without any effort. I know the effort I've put in. For every class, like I said, I will have toiled so much. I do the same for my younger daughter also. Na? So if you can do that for a neurotypical children, then we absolutely have to do it for a neurodiverse. लेकिन जब आप पढ़ाओ तो लगना चाहिए बहुत easy है. The child should get the impression it is effortless. The next question, Mr. Vaishali, Yeah. Joshua has started saying time check, time check. Okay, Yeah. madam, I'll be in But touch. we can hear you, I mean, on and on, because it's so inspiring, no? I mean, just to teach. We have time till 7. So I have time till 7. So we have 18 more minutes for questions. The laptop Joshua का है. That is what he's holding over my head. गुड इवनिंग मैम Yes, ma'am. Yes. मैम स्क्राइब जो रहता है उसके लिए जैसे हम अगर सेंटर पे लेके जाएंगे तो स्क्राइब जैसे स्टूडेंट ही होना चाहिए या हम किसी फीमेल या लेडी को लेके जा सकते हैं मैम और क्या पिछले साल कोविड था इसलिए एनआईएस ने 1 साल के लिए किया था. मुझे कल परसों में पता लग जाएगा. हो सकता है आज ही पता लग जाए कि वो अभी भी अलाउड है या नहीं. वो हुआ तो मैं आपकी हर्षाली को भेजूंगी, वो सब ग्रुप्स में डाल देगी. बट चांसेस कम है मैम. तो मीन्स स्टूडेंट को ही लेके जाना पड़ेगा. in the next couple of days. I Ma'am, think अभी तक official policy we are waiting for this year. अभी तक NIOS से there is no official policy as yet. इस साल क्या होगा? अभी तक अभी तक अब स्क्राइब के बारे में जितना भी क्वेश्चंस है, जब वो नया पॉलिसी आएगा तब हमको पता चलेगा. उससे पहले पता नहीं चलेगा हमको क्या होने वाला है. ओके थैंक यू. he's cutting me short. Thank you. नहीं एक्चुअली वो सच है बिकॉज़ किसी को पता नहीं है. लास्ट ईयर तो एक्सेप्शन था कोविड की वजह से. इस साल हमको एक्चुअली पता नहीं है क्या है. सर चांसेस कम है उसके. ओके थैंक यू. Yeah. Next, Rohitesh, sir, you have some question? Yeah, I have another question, but there was somebody else before me. See, okay, it's not that. Okay, so I had asked Dimans to, for extra time. They've also written that he can have a prompter. Since he has comprehension difficulties, he may be helped to answer in points. The prompter क्या करेगा? सर प्रॉम्प्टर स्क्राइब ही होता है. स्क्राइब प्रॉम्प्टर वो एक और वर्ड है कुछ. एक्चुअली नो सर, एक्चुअली अभी हम विवेक के बारे में बात कर रहे थे. सो क्या हुआ था, सो ही हैज अटेंशन डिफिशिएंसी. ठीक है ना. वो क्या करता है, मतलब ही राइट्स वन क्वेश्चन एंड देन टिल द टाइम यू टेल हिम यू स्टार्ट फोकसिंग, ही डजंट फोकस. उसको पता तो है. ठीक है. सो देन somebody has to just tell him, Vivek, let's finish. हाँ. So that is what you call a prompter. Okay. Prompter, scribe, same application. Okay. Different application? No, same application. तो उसकी जरूरत नहीं है.
हाँ ठीक है, आप वो देख लीजिए, वो बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। सर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, एक्चुअली थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अच्छा, तो मतलब वो ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर तुमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्या इस क्वेश्चन को दोबारा कर लो, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ जी, दैट्स इट। नहीं, पर अगर स्क्राइब को थोड़ा सा पता हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, स्क्राइब आई टोल्ड यू अर्लियर, मोस्ट मिसयूज्ड एस्पेक्ट ऑफ NIOS। बच्चे ने एक वर्ड नहीं पढ़ा होगा सब्जेक्ट का, वो स्क्राइब को प्रिपेयर करके ले जाएंगे, छोटे भाई बहन को अच्छे से पढ़ा देंगे, क्वेश्चन पेपर छोटा आपका भाई बहन दे देगा। नहीं, वो काम नहीं है। But sir, otherwise, अगर scribe informed हो, so what is the harm? Because the student once he finishes the exam, बहुत self confidence gain होता है, बहुत अच्छा होता है. It's a very good moral booster. Actually, I had to train him do otherwise. उसको क्या था कि अगर आंसर पूरा पता है तो पूरा लिखेगा, और अगर थोड़ा भी नहीं पता है तो पूरा छोड़ देगा, ये मुझे नहीं आता। और उसकी टीचर अगर उसको बोलती थी कि इसको अटेम्प्ट कर लो, तो either I already told you, I don't know, why are you asking me to do it? मुझे क्या लगता है सर, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करके देखिए, जो मैंने अभी बोला, हम लोग हमेशा अपने स्कूल में क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स मार्क करवाते हैं। हाउ वी टीच देम इज कि अगर सपोज वो पेंटिंग वाला मैंने आपको दिखाया था, हाँ, with 3 keywords, let's say Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Renaissance, 3 keywords. How we teach them is अगर 2 keywords हो तो आप ये लिखोगे, 3 keywords हो तो आप ये लिखोगे. We actually prepare like that. So आप करके देखिए, तो अगर थोड़ा सा भी नहीं आता होगा, you might be able to overcome this problem. कि ठीक है, मुझे maybe एक next keyword time, नहीं madam, आता, because अगले महीने तो उसका टेस्ट है, अभी मैं नया चीज शुरू करूंगा तो it will create another problem. absolutely, please don't start anything new at the very end. हाँ, And sir, so if you have further for his questions, science and maths, you I can call me. You can please call us anytime. sure, thank you, ma'am. आप कहाँ based हैं? Bangalore, Okay, please call. sure, thank you. वो होम साइंस वाला भेज दीजिएगा मैडम, the curriculum is too vast. अच्छा, you want to know the marks distribution? हाँ 10th का? हाँ 10th का। सर हम तो सारा curriculum ही करते हैं. I do everything. I do every single word, but I can definitely send you the marks distribution. Did you check the home science book? First book के No, पीछे? मैंने बुक तो मुझे पता ही नहीं कहाँ है, मैं तो डाउनलोड कर करके पढ़ा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी, मैं आपको पक्का आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर वगैरह सब भेज दूंगी. सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए मैंने सारे, अच्छा, that I have. okay, fine. Okay, Jana is going. Next question from Mrs. Shobha Seth. NIOS is going to change to objective exam. There are discussions, but we do not know yet. Nothing confirmed so far. There are discussions, and we actually, somebody has told us it might happen by 24. Yeah, Not so yet. they might be looking at some curriculum revision also, because the one curriculum in for data entry is very old. They are still teaching Windows XP, which is already 7-8 years old. So 100 DOE तो 100% revise हो रहा है, but revisions are happening in other subjects also. कब होगा पता नहीं. We don't have an official confirmation But yet. yes, they are agreed to it. बहुत मुश्किल से माने, but उन्होंने ये definitely मान लिया है कि objective type, what they are agreeing to is that special needs children can have a different question paper, which will have all the same questions. By the way, keep that in mind. They'll have all the same questions, but they'll be multiple choice. I've said this. I had to teach DU on a 10-year-old junk laptop. Yeah, we understand. True. We are also looking for a Windows XP, for practical. कहीं से मिल नहीं रहा है. And actually, I found there's a simulator, XP simulator. Hai, in case if you want to try, you can try. It will not give you all the features, but it is just like a web page. It will tell you when you open my computer, at least it will show you the C drive, E drive, and all. So you finish the okay. Pratiksha, please update, send the marks distribution. Okay. We don't have the books now, ma'am. Actually, books now, I had sent a link in the start, so you have all the study material there, right? Which includes your books, previous question papers, TMAs, everything is included there. So you can just check it out. You can find all the information. Very easy to find out. Simply write NIOS 10th TMA. वो सीधा आपको TMA पे ले जाएगा. Actually, NIOS online study material Google कर देना. It will take you right to the page where you can find the cover. That is the best. Online study material NIOS 10th. I think, No more hands raised up. Any further questions, please? yeah, I'm putting the link again in chat box for study material that sir shared earlier. I think no questions. We can wrap up today's session. One more hand. Okay, one more. Yeah. Last. Yeah. Last question.
Ma'am, my son is 16 years old. He's autistic, and his problem is he can read and write, and he has the comprehension issues. Now, my part is what they say in his school. They are saying let him complete the OBC, then he can go for secondary. So he's already 16 years. So which subjects I have to select? I have to complete the OBC or No, ma'am, you don't have to. For secondary, you do not need certification, but it is possible that the teachers think that he will benefit from by doing OB level C. Maybe that's why they're saying it. But otherwise, please don't go by age. Please go by, his ability. Yes. That's why I gave you that, that slide where it said how to choose the subjects. Yeah, that is what I'm very confused, ma'am, because he's good in math, he's good in numbers, but comprehension lagging. That is a problem. Ma'am, NIS 10th ka maths, please open. It is at par with CBSE. Will your son be able to do differentiation and integration? No, ma'am. No, no. Will he be able to solve quadratic equations? No, So no. that is exactly the point I mentioned earlier also. This is just bias, right? I think what we should do is to have complete clarity. You should open up the books and subjects and go through it once to understand and then decide what your son can do. That's what we did actually. We opened up all the subjects. We went through, we saw how the method of information is there. Like for instance, business studies will be more like a story. It's like, okay, this gets manufactured here, from there it comes to distributor. So you can take a storytelling approach to teaching that. Okay, business studies is doable. But that is something that you will need to evaluate for yourself based on your child's ability and what you think the future plans for him. Okay. And Shuji, thank you for the blessings and so many cakes. Yeah, you're getting cakes and cookies. Very fond of cakes, so thank you so much. So day after, I'm really sorry. We're starting late, right? Yeah, no issues. We can we'll inform everyone that next session is exclusively question answer session. So, but we are starting at 5:30 instead of 5. I'll be putting in groups also. So just I had a last minute plan that had to be changed. So sorry. No problem. It's fine. We can do it. I mean, so can we wrap up today? So we'll be there at your time also. Yeah, so we can wrap up today's session. It's really wonderful. Both of you, thank you so much. I mean, for taking out so much time in these three, power packed knowledge session on NIS. I mean, seriously, NIS के सिवा भी जो आपका जो teaching method है, that is more impressive to me because बाकी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बट जो हम कहते हैं ना हमारे बच्चों को वो जैसे सीखते हैं वैसे आप लोग सिखा रहे हैं एक्चुअली so that's wonderful thing. It's very important. Actually, one more homework before we wrap up. People who want to enroll in NIOS, please go through the NIOS website once and go through the NIOS admission form so that in case if you have any further questions, we will discuss it during our next session. We have not done the filling of the NIS form. So if anybody is, exploring registering for NIS, आप एक बार देख लीजिए, उसके questions भी पूछ लीजिए next time. I'm going to do that first actually. आप पहले so then मतलब you might want to look at the curriculum, you might want to look at the question papers. मतलब ये सब आप कर लेना. Yes. Okay, guys. See you. Bye. See you after then. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Okay, bye. See you all. Bye.